part. Okay, so I think that's the reason people are less today. Okay, otherwise it's a very beautiful topic, but still we have, even though minimum nine, eight, nine people have joined, but still we can have a very good discussion on this. So hoping to have a very good discussion. As said by Professor Das that Dr. Sirswal is taking many initiatives. He has many online journals which he has published. So so he's doing good at academic work and waiting for the beautiful lecture this evening, and also very good discussion. I hope we can have with Professor Avinash, Dr. Rajit Ghosh, and K.C. Patnaik sir, and others, Bhunavan sir, and others who are present here. I think we'll be having a very beautiful discussion this evening. So, with these words, as I said, Dr. Silswal doesn't require any introduction. So, with these words, I invite Professor Dr. Desh Raj Sirswal sir to come and speak. Over to Dr. Silswal for his lecture. And also welcome all the participants to this webinar. Okay. So, with these words, let's move to Silswal. Dr. Silswal. Please. Namaskar to all. Happy Constitution Day to all the members of philosophy family. जो आज का मेरा टॉपिक है वो थोड़ा लाइटर मोड पे है. मतलब एक्चुअल में 2010 के टाइम में मैं एक पेपर पे काम कर रहा था, फिलोसफी एंड वैल्यूज इन स्कूल एजुकेशन ऑफ इंडिया. तो वहां पे मुझे कुछ चीजें जानने का मौका मिला कि कैसे वैल्यू एजुकेशन के ऊपर हमारी जो स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर कैसे जोर दिया जा रहा है और फिलोसफी की क्या पोजीशन है. 2007 में एक यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी जिसमें हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड की 42 कंट्रीज हैं जिन्होंने फिलोसफी को स्कूलिंग से स्टार्ट किया हुआ है. ये 2007 की रिपोर्ट है. आज अगर हम देखें तो ये मे बी स्टेटस चेंज हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने अब देखो फिलोसफी ऑफ चिल्ड्रन नाम से भी एक फिलोसफी फॉर चिल्ड्रन नाम से भी एक फिलोसफी की ब्रांच आई, जहाँ पे 3rd और 4th क्लास के बच्चों के लिए फिलोसफी को शुरू किया गया है. मतलब वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है फिलोसफी के बारे में. इंडिया में भी ये इनिशिएटिव लिया गया है फिलोसफी फॉर चिल्ड्रन का. तो प्रोफेसर सुंदर सरकई की एक बुक भी आई थी फिलोसफी फॉर चिल्ड्रंस के लिए. तो इन्हीं चीजों को देखते हुए मेरे मन में ख्याल आया कि लास्ट टाइम मैं जब टॉक हुई थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ऊपर टॉक हुई थी फिलोसफी फैमिली की, मे बी 2021 में. तो ये काफी गैप रह गया कि हम इंटरेक्ट नहीं कर पाए, तो बीच में थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं नहीं टाइम दे पाया इसमें. तो पिछले दिनों मेरे उसमें जब NEP 2020 लागू की गई तो वहाँ पे हमारे सामने काफी कुछ नया देखने को मिला, सीखने को मिला. तो उसी दौरान मैं एक कमेटी का मेंबर बना चंडीगढ़ में जो NCERT की है, कि स्कूल जो एजुकेशन है उसके अंदर वैल्यू एजुकेशन की क्या पोजीशन है, उसका जो पेपर फॉर्मेट बनाना था. तो उस कमेटी का मैं मेंबर बना. तो उस टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ने को मिला कि क्या क्या इनिशिएटिव हम लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं वैल्यू एजुकेशन के ऊपर. तो जो ये आज का जो प्रेजेंटेशन है वो एक समरी टाइप है उसी जो भी मैंने पढ़ा और जो भी सीखा. अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो आर्टिकल 51A है उसके अंदर हम लोगों को जो 42nd अमेंडमेंट देखने को मिलती है, और जो फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर हम लोगों को यूनिटी, इंटीग्रिटी, हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, preservation of our composite cultures, rich cultural heritage, compassion, scientific temper, humanism and abjuring violence, ये कुछ वैल्यूज के बारे हम लोगों पे जोर दिया जाता है. तो अगर हम देखें कि आज के टाइम में एक हमारे सामने क्राइसिस आता है वैल्यू एजुकेशन का. जैसे जो लोग हमसे बड़े हैं, जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, उनको भी ये चीज देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे नई हमारे सामने एक बैच आता है स्टूडेंट का,
तो उनका जो वैल्यू सिस्टम होता है वो हमारे जो उम्र के लोग हैं या 40+ हैं, उनका जो वैल्यू सिस्टम था उससे टोटली डिफर हमारे सामने मिलता है। कहीं ना कहीं ये चीज एक बड़ी एक ट्रेजेडी है कि जो हम लोग फिलोसफी के अंदर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं, आइडल टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं खो रहा है। कहीं ना कहीं वो चीज हम स्टूडेंट और टीचर के बीच में नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अब आज के टाइम में हम बैच को देखते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम टोटली डिफर है जो हमारा वैल्यू सिस्टम था। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये बात कचोटती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जहां तक मेरी थोड़ी बहुत समझ रही है, जैसे जैसे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके अंदर वैल्यू सिस्टम पे हमारे प्रभाव पड़ रहा है। रीजन क्या है कि अगर हम देखें, एजुकेशन को एक कमोडिटी मान लिया गया है, बच्चे पैसे दे के उसको ले रहे हैं, तो उनके लिए टीचर भी एक मतलब सर्विस प्रोवाइडर ही बन गया है। तो ऐसे में मतलब जो वैल्यू की हम बात करते थे, वो चीज वहां पे नहीं रही। मतलब जो हम मूल्य शिक्षा की बात करते थे, वैल्यू एजुकेशन की बात करते थे, या वैल्यू सीखने की बात करते थे, वो कहीं ना कहीं बीच में से कड़ी टूट गई है। अगर हम एंशियंट एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, तो जैसे हमारे सामने शिक्षा के बारे कहा गया था, सा विद्या या विमुक्ति। शिक्षा वही है जो हमें मुक्त करती है, मतलब जो हम लोगों को बाउंडेशन लेस बनाती है, चीजों को समझने की परख देती है, और सेल्फ रियलाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता था उस एजुकेशन के अंदर। तो हम लोग जैसे एथिक्स के अंदर बच्चों को इंडियन वैल्यू सिस्टम के बारे पढ़ाते हैं, फोर पुरुषार्थ के बारे पढ़ाते हैं, धर्मा के बारे पढ़ाते हैं, धर्म के आगे दक्ष लक्षण है उसके बारे पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं वेल एस्टेब्लिश्ड वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को अपने ट्रेडिशन में देखने को मिलता है। और आज जब हम एजुकेशन में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, तो उसमें हम लोग यही देखते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हीं जो मूल्य हैं उन पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, उन्हीं को रीजनरेट करके री इंट्रोडक्शन देके दोबारा से एक तरह से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, तो वैल्यूज बेसिकली क्या हैं? वैल्यूज वो बिलीफ होते हैं हमारे सामने जो कि हमारी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी होती है। तो वैल्यू एजुकेशन जब टर्म आती है, तो हमारे सामने वो सारा खाका घूम जाता है, सारी चीजें घूम जाती है जो लोगों ने, जो हमने बचपन से सीखी हैं, चाहे वो फैमिली के थ्रू, चाहे हमारे रिलीजियस सिस्टम के थ्रू, चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम में मतलब अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके, या क्लासरूम इंटरेक्शन से जो चीजें हम लोगों को सिखाई जाती हैं, वो सारी की सारी हमारे सामने आ जाती हैं। अगर हम वैल्यू एजुकेशन टर्म की बात करते हैं, तो सीवी गुड नाम के राइटर ने लिखा है, वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस बाय मींस ऑफ विच ए पर्सन डेवलप्स एबिलिटी, एटीट्यूड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ द पॉजिटिव वैल्यूज इन द सोसाइटी इन विच ही लिव्स। मतलब समाज को चलाने के लिए जो अच्छे चीजें हैं या अच्छे गुण हैं, वो सारे के सारे हम वैल्यू एजुकेशन के थ्रू प्राप्त करते हैं। तो अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं वैल्यू एजुकेशन की, तो 3-4 डायमेंशंस हैं जो वैल्यू एजुकेशन में हम लोगों के सामने आती हैं। पहला है सोशल डायमेंशन, कि समाज में हम लोगों को कैसे रहना है, वो सारी की सारी वैल्यूज का एक डायमेंशन है कि हम वैल्यू एजुकेशन में समाज में कैसे रह सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। सोसाइटी एक परिवार की तरह हमारे सामने आता है, एक संस्था है जिसमें स्कूल है आपके, जिसमें आपका परिवार है, जिसमें आपका रिलीजियस सिस्टम है, वो सारी की सारी जो संस्थाएं हैं बनती हैं। तो जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है, वो उसकी एक डायमेंशन सोशल डायमेंशन भी है। दूसरी है एजुकेशन डायमेंशन। एजुकेशन डायमेंशन का मतलब है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं,
तो कैसी एजुकेशन हम लोगों को मिलनी चाहिए, उसके ऊपर किस तरह की एजुकेशन है जो हम लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए इफेक्टिव रहेगी, तो वो उसकी एजुकेशन डायमेंशन होती है। एक स्पेटियल डायमेंशन होती है जिसके अंदर हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं, हम अपने बच्चों के अंदर उस तरह की वैल्यूज देते हैं जिससे कि वो अपने देश के प्रति, अपने जो कर्तव्य हैं उन प्रति एक अवेयरनेस हम लोग देते हैं, तो वो वैल्यू एजुकेशन में आती है। फोर्थ जो डायमेंशन है वो है कोग्निटिव डायमेंशन। इसके अंदर हम बेसिकली क्या लेते हैं कि आदमी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, तो उसके लिए जो कंपोनेंट जरूरी होते हैं वो सारे के सारे एजुकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती वैल्यू एजुकेशन, यहाँ पे आपकी इमोशन डेवलपमेंट भी होती है, और उसके साथ साथ जो मोरालिटी है, मोरालिटी भी अपने आप में डेवलप होती है। तो ये कुछ डायमेंशन है जिनके थ्रू हम लोग वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं। अब वैल्यू जो है, वैल्यूज कहीं ना कहीं एक तरह की हम ये मान सकते हैं कि वैल्यूज को सिखाया भी जा सकता है, और आदमी अपने आप भी सीखता है फॉलो अप करके। जैसे मान लीजिए बच्चा, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो अपने परिवार में जैसा बिहेवियर देखता है, बड़ों के साथ उसके पेरेंट्स कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, छोटों के साथ उसका कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उससे वो सीखता है कि किस आदमी के साथ कैसा हमें बर्ताव करना चाहिए। वैसे ही एक टीचर एक आइडल होता है, उसका जो लाइफ पैटर्न होता है, उसका जो थिंकिंग स्टाइल होता है, उसकी जो सोच होती है, उसका भी इफेक्ट हमारे बच्चों पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी वैल्यू जनरेट करने के अंदर, इंसान के अंदर बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं, तो हम इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पाते हैं कि इंडियन फिलोसफी में हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच को मानते हैं कि हमारे यहाँ पे मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, या एथिक्स है, वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन वेस्टर्न में ऐसा नहीं है, उन्होंने काफी क्लियर क्लासिफिकेशन की गई है। तो सोसाइटियल जो वैल्यूज होती हैं उनको भी डिफरेंशिएट किया गया है, मेटाफिजिक्स की अपनी डेफिनेशन है, एपिस्टेमोलॉजी की है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट भी दिखाई देती हैं। लेकिन इंडियन जो थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर हम लोगों को एक इंटीग्रेशन दिखाई देती है। तो अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा की बात करते हैं, तो वहां पे जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव ली गए हैं, मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो सारे के सारे हमारे सामने आते हैं। तो एक हमारे सामने हम लोगों को देखना पड़ता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा के अंदर क्या क्या पॉलिसीज आई हैं, कौन कौन सी चीजें हुई हैं जहाँ पे हम लोगों को इन चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है। ये काफी वास्ट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि वैल्यूज हमारे आमने सामने रहती हैं, हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग उस, आप ये देखो कि साइकोलॉजी है या दूसरे अदर सोशल साइंसेज है, सभी इनके ऊपर बात कर रही हैं। ये एक ये लगा लो कि एथिक्स इंडिपेंडेंट एक नॉलेज की ब्रांच बन गया है। जैसे हम साइकोलॉजी के, फिलोसफी के अंदर, सॉरी, एथिक्स वगैरह को पढ़ते थे, एक ब्रांच के रूम में पढ़ते थे। आज का जो हमारा टाइम है उसके अंदर हम देखते हैं कि वैल्यू एजुकेशन या वैल्यूज अपने आप में एक ब्रॉड एरिया बन गया है, जिसके अंदर हम काफी कुछ को लेते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपका पीएचडी का जो कोर्स वर्क है, उसके अंदर एथिक्स की बात की जाने लगी, एक कंपलसरी पेपर यूजीसी ने शुरू कर दिया है। उसके अलावा आपके यूपीएससी के अंदर जो फोर्थ पेपर होता है प्री एग्जामिनेशन के अंदर, तो फोर्थ पेपर जो एथिक्स इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, उसकी जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है? क्योंकि आज हम लोग इस चीज की कमी को देखते हैं कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हमारे आसपास चीजें हैं, या जो हमारे आसपास व्यवहार हो रहा है, आसपास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस कमी को महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को अपनी जो नई जनरेशन है उसको किस तरह से एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, एक अच्छे जीवन मूल्य देने हैं। तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम
वो वैल्यू एजुकेशन के ऊपर बात करें। अगर हम देखते हैं तो इंडिया के अंदर काफी अमेंडमेंट हुई हैं, काफी डेवलपमेंट हुई हैं, जिनके अंदर पहले कोठारी कमीशन आया 1964 से 1966 तक। उसके बाद एक करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल आया 1975 में। फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई 1986 में, जिसको 1992 में मॉडिफाई किया गया। उसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया 1988 में। उसके बाद आए रिकमेंडेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और उसमें एक रिपोर्ट थी 81st रिपोर्ट ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जो कि 1999 में आई। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो भी अमेंडमेंट हुई हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं इन जितनी भी ये रिपोर्ट्स आई हैं, सब में हम वैल्यू एजुकेशन का कंपोनेंट देखते हैं। उन्होंने हर रिपोर्ट में ये खास बात रही है कि हमारे सामने वैल्यू एजुकेशन की उन्होंने बात की है, वैल्यूज की उन्होंने बात की है, एम्फेसाइज किया है कि हमारे अगर सोशल स्ट्रक्चर को अच्छा बनाना है, तो जो हमारे ह्यूमंस है, जो हमारे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके अंदर अच्छी वैल्यूज जनरेट हों, ताकि एक सोशल इंटीग्रिटी बने रहे, नेशनल इंटीग्रेशन बनी रहे, और एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो कंसेप्ट है वो हम बात करें। अब वसुदैव कुटुंबकम का हम लोग शुरू से नारा लगाते हैं, तो जो ये वसुदैव कुटुंबकम है, इसके लिए भी हमें एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम देख सके कि जो एक जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और आपका इकोनॉमिक बेसिस पे जो डिफरेंस होता है, वो वो चीज ना हो। तो उनसे ऊपर उठ के एक वैल्यू सिस्टम ऐसा जनरेट किया जाए जो कि इन सबसे ऊपर होके आदमी को आदमी समझे। अगर हम कोठारी कमीशन की बात करते हैं 1964 और 1966 में, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। इसकी जो मतलब जो मेजर फाइल है या डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें से मैं आपकी कोटेशन बताता हूँ। ए न्यू प्राइड एंड ए डीपर फेथ एक्सप्रेस्ड इन लिविंग फॉर द नोबल आइडियाज ऑफ पीस एंड फ्रीडम, ट्रूथ, कंपैशन आर नाउ नीडेड। मतलब उस टाइम में भी इस चीज की जरूरत महसूस करने की गई थी कि हम लोगों के अंदर ये नोबल आइडियल पीस का, फ्रीडम का, ट्रुथ, कंपैशन वगैरह आज की हमारी जरूरत है। तो इन्होंने कोठारी कमीशन में एक सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन दी गई थी, जिसमें इन्होंने एक जो चैप्टर था, चैप्टर 7 सोशल स्कूल करिकुलम का, तो इसमें इन्होंने एजुकेशन ऑन सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, इसके ऊपर बड़ा जोर दिया है। और इन्होंने कहा है कि हम लोगों को ह्यूमन वैल्यूज, ये ह्यूमन वैल्यूज सिखाने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कोठारी कमीशन की जो ये स्टेटमेंट थी, आज भी हम देखते हैं कि काफी रिलेवेंट है। ये 1964 और 1966 में उन्होंने बात की थी, लेकिन आज भी हम महसूस करते हैं कि हम लोगों को सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज की जरूरत है, आदमी को एक अच्छे ढंग से अच्छा इंसान बनाने के लिए। आज हम देखते हैं कि जो हमारा यूथ है, उसमें काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों को डिस्टर्ब कर सकती हैं। जैसे कि एक तो पेशेंस है, पेशेंस उनमें नहीं है। आप ये देखो कि जब एक लाइफ स्ट्रगल के टाइम, मतलब चाहे वो स्टूडेंटशिप हो, चाहे करियर के एडवांसमेंट की बात हो, या करियर बनाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है, उनके अंदर वो पेशेंस लेवल नहीं है। इसी वजह से जो सोसाइटल केस वगैरह या दूसरे जो चांसेस हैं, वो हमारे सामने बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनको वो वैल्यूज नहीं दे पाए हैं जो उनको उनकी मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हो, और उनको इंटीग्रेटेड रख पाए। मतलब उनको ये चीज समझा पाए कि लाइफ के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं या डायमेंशंस होती है, उनके अंदर ये जो स्ट्रगल है वो अपने आप मतलब बना ही रहता है। लेकिन हम लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने आप को संभाल के रखें, यानी सेल्फ लव का जो कंसेप्ट है, वो चीज आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सेल्फ लव
तभी आदमी के अंदर पैदा हो सकता है, जब उसकी तीनों डायमेंशन, सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल जो वैल्यूज की जो उसको एक आदत होनी चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए, और एक इंटीग्रेटेड उसकी अप्रोच लाइफ के प्रति होनी चाहिए। तो ये कोठारी कमीशन की एक मतलब इनकी वैल्यू सिस्टम के ऊपर या वैल्यू एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बड़ा एम्फेसाइज किया था। उसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 में इन्होंने ट्रूथ, राइटियस कंडक्ट, पीस, लव, नॉन वायलेंस को कोर यूनिवर्सल वैल्यू माना है। और इन्होंने कहा है कि अगर हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम चाहते हैं, तो जो ये 5 जो हमारी यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, इनकी हम बात कर सकें या इनकी बात हमें करनी चाहिए। यानी बच्चों की एजुकेशन में ये 5 चीजें होनी चाहिए। और ये 5 जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से इसको क्लासिफाई किया है। उन्होंने 5 डोमेन्स माने हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी के, जैसे इंटेलेक्चुअल है, फिजिकल है, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है और स्पिरिचुअल है। और इनको मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, पांचों के पांच जो डोमेन है ह्यूमन पर्सनैलिटी के, इसको सही रखने के लिए हमें इन जो 5 वैल्यूज हैं हमारे सामने, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत बताई है कि सत्य के प्रति उनका भाव होना चाहिए, अच्छा कंडक्ट होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, प्रेम की भावना उनके अंदर होना चाहिए, अहिंसा का उनके अंदर एक लगाव होना चाहिए या अहिंसा उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो पांचों की पांचों जो वैल्यूज हैं, ये कहीं ना कहीं आदमी के जो सेल्फ मैनेजमेंट है उसमें भी हेल्प करती हैं। जैसे रेगुलरिटी की है, पंक्चुअलिटी की है, क्लीननेस की है, सेल्फ कंट्रोल है, सेंस ऑफ ड्यूटी है, डिजायर टू डिजर्व है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन टू ह्यूमन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। इन सब पे इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो ये फ्रेमवर्क बनाया गया था, इसने भी मोरल, एथिकल, जो ह्यूमैनिस्टिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर जोर दिया था। तो हम देखते हैं कि जो भी ये अमेंडमेंट हुई है, उन्होंने तो इस चीज को हमें गाइड किया है, पहले ही उन्होंने हम लोगों को इस तरह की वैल्यू सिस्टम बनाने के लिए हम लोगों को गाइड किया है। तो ऐसे में हम लोगों को इन रिपोर्ट्स को पढ़ के दोबारा से देखना चाहिए कि क्या जो पहले के थिंकर्स थे या जिन एक्सपर्ट्स ने ये थॉट प्रोसेस पे काम किया था, उन्होंने हमें एक हिस्टोरिकली बहुत हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा है इस चीज का, कि हम लोग, उन्होंने उस टाइम भी जरूरत महसूस की थी और आज भी उस चीज की जरूरत है, मतलब आज के टाइम भी ये चीजें सारी की सारी रिलेवेंट है। तो ये मतलब इनके ऊपर काम करने की आज की हमारी जरूरत है। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी इसी जो फ्रेमवर्क है, इसके अंदर इन्होंने बात की थी कि जो हमारी, हम लोगों को, बच्चों को सभी रिलीजियस के प्रति अवेयर करवाना चाहिए। उनकी जो रिलीजियस वैल्यू है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है बच्चों को मतलब एक वैल्यू जनरेट करने के लिए। आप सभी को पता है कि अगर हम अपने आसपास के सिस्टम में देखते हैं या हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को देखते हैं, तो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है वो वैल्यू जनरेशन का बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारे सामने, जो सिखाता है इन चीजों को, वैल्यूज को सिखाता है। और आप ये देखेंगे कि जो कोई भी लोग इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए होते हैं, अगर आप उनको क्लास में पढ़ाने की कोशिश करते हो इन वैल्यूज को, वो वहां पे इतना रिस्पॉन्डिंग नहीं होते। लेकिन एक रिलीजियस सेक्टर में रह के, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रह के जो उनको बातें सिखाई जाती हैं, उनको वो बड़ा गौर से सुनते हैं और बड़ा एक पूरी डेडिकेशन के साथ उन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा हमारे सामने एक इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल रखा है कि हम लोगों को रिलीजियस जो वैल्यूज हैं उन सब के बारे बतानी चाहिए। और उसके अलावा एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी
थी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर बनाई गई थी। इनकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की, इन्होंने भी बड़ा अच्छा एम्फेसाइज किया था ट्रुथ के ऊपर, राइटियस कंडक्ट के, धर्म के ऊपर, पीस शांति के ऊपर, लव प्रेम के ऊपर, और नॉन वायलेंस अहिंसा के ऊपर। इन्होंने भी इन 5 कोर वैल्यूज को बड़ा इंपॉर्टेंस दी थी, जो कि इनके इनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर हम इंडिया के अंदर वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये 5 हमारे सामने एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके अलावा एक और था, एनसीईआरटी का एक करिकुलम था जो कि 10 ईयर स्कूल था, एक फ्रेमवर्क। ये एक डॉक्यूमेंटेशन की गई थी 1975 में, और 1986 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, उन्होंने भी, इन दोनों ने कैरेक्टर बिल्डिंग पे बड़ा जोर दिया है, और उसके साथ साथ सोशल और मॉरल वैल्यूज बच्चों के अंदर डेवलप करने के ऊपर, और अ, उसके थ्रू इन्होंने कहा था कि अगर हम बच्चों के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं और सोशल और मॉरल वैल्यूज की अगर हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तो वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी और जो हमारी नेशनल हेरिटेज है या ट्रेडिशन है, उसको समझने में, उसको प्रिजर्व करने में, और उसको अच्छे ढंग से एक व्यवहार में लाने के लिए ये जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो 1986 का और 1975 की जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर भी हम लोगों को ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिलता है वैल्यू एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद हमारे सामने जो मैंने एक बताया था 86 में, द कल्चरल पर्सपेक्टिव नाम से सब हेडिंग से इंस्टीट्यूट्स ऑफ मॉरल एजुकेशन एक टास्क था एनसीईआरटी का। उन्होंने भी वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की बात की गई है, और आज आप ये देखते हो कि जो एनसीईआरटी है उसके अंदर जो वैल्यू सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया है। तो जो उनकी एजुकेशन का वैल्यूज के ऊपर जो कंपोनेंट है वो इसी के थ्रू आज इनकी प्रैक्टिस में है। उसके अलावा 1986 में हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी। वहां पे टीचर्स के रोल और स्टेटस के बारे बड़ा अच्छा एम्फेसाइज किया था। आ, अब हम लोग स्टूडेंट्स की तो बात करते ही हैं। स्टूडेंट जैसे मैंने भी अभी एग्जांपल दिया था कि जो हमारी आगे जनरेशन आ रही है, कहीं ना कहीं वैल्यूज का हम लोगों को डिफरेंशिएशन मिलता है। हम लोग जो टीचर हैं वो लोग पहले एक आइडल मानते थे कि हम लोग टीचर्स हैं, तो हमारे लिए जनरेशन गैप नाम की चीज नहीं है। जनरेशन गैप क्योंकि हम लोगों को हर साल नई बैच में बच्चों का मिलता है, नया माइंडसेट मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो नॉलेज अपग्रेडेशन है वो होता रहता है, और इस वजह से हम लोग नहीं इस तरह की जनरेशन गैप को मानते। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो आज की यंग जनरेशन आ रही है, नेचुरली आज के टीचर जो पहले से, मतलब ये लगा लो 10-15 साल से प्रैक्टिस में है, उन लोगों की एक चीज महसूस होती है। लेकिन 1986 में टीचर्स के ऊपर भी बड़ा एक इम्पैक्ट डाला गया था, या एक इंस्ट्रक्शनल पॉइंट रखा गया था कि आप लोगों को कैसा अपना स्टेटस बना के रखना है। तो मैं इसको कोट करता हूँ: द स्टेटस ऑफ द टीचर रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चरल ethos of a society. It is said that no people can rise above the level of its teachers. The government and the community should endeavor to create conditions which will help motivate and inspire teachers on constructive and creative lines. Teachers should have the freedom to innovate, to devise appropriate methods of communication and activities related to the needs and capabilities and the causes of the community. देखो ये 1986 में इस पॉलिसी की, 1986 की पॉलिसी की रिकमेंडेशन है एक तरह से, जो कि बाद के लिए थी कि ऐसा होना चाहिए, टीचर्स को ये सुविधाएं होनी चाहिए, टीचर्स के पास ये फ्रीडम होना चाहिए सोचने की, नई इनिशिएटिव लेने की। लेकिन क्या आज हम देखते हैं कि क्या टीचर्स को ये सारी फ्रीडम मिल पाती है, या इस तरह का एनवायरनमेंट इंडिया के अंदर क्रिएट हो गया कि वो बच्चों को इस तरह की वैल्यूज दे पाए, मतलब इंडिपेंडेंटली वो इनके ऊपर काम कर पाए। ठीक है। तो एक ऑल इंडिया सर्वे हुआ था, 5th ऑल इंडिया सर्वे, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने ही किया था।
था। तो उन्होंने भी एक कोटेशन दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर तो बहुत काम हो चुका है। मतलब हम काफी स्टडीज देखते हैं कि बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट कैसे होती है। इवन हम एथिक्स के करिकुलम में भी अपने जो बच्चे हैं उनको बताते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस हैं। साइकोलॉजी में भी हम इस चीज को पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें इस सर्वे में उन्होंने एक्सरसाइज किया था कि मोरल एजुकेशन कैसे दी जाए, इसके ऊपर भी हमारा जोर होना चाहिए। और कैसे हम रिसर्च डिजाइन करके कैसे मेथड अपना के हम मोरल वैल्यूज को दे सकते हैं, इस चीज के ऊपर उन्होंने बड़ा एम्फेसाइज डाला था। और जो एनसीईआरटी का करिकुलम था मतलब 2005 का, उन्होंने मेंशन किया था कि एथिक्स और जो फिलोसफी जैसे फील्ड है उनकी भी नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2005 की जो इनकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अंदर, कि फिलोसफी और जो एथिक्स है वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई जाए। और आज की हम अगर कंडीशन देखते हैं ऑल ओवर इंडिया, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट को एक तरफ तो हम एनईपी 2020 लागू कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखो कि फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट की डेवलपमेंट के लिए कितना काम हो रहा है ये हम सबको पता ही है। ठीक है। और इन्होंने ये बात इसलिए एम्फेसाइज किया था कि बच्चों को अच्छी जजमेंट देने के लिए भी, मतलब एक अच्छी जजमेंट करने के लिए एथिकल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और उसको पता होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो इस चीज की समझ तभी आएगी जब बच्चों को उन चीजों के बारे बताया जाएगा, यानी फिलोसफी और एथिक्स के बारे बताया जाएगा। उसके अलावा एक रिपोर्ट आई थी 2007 में, यशपाल रिपोर्ट हायर एजुकेशन की। यशपाल रिपोर्ट और हायर एजुकेशन, पता नहीं हम लोगों में से कितनों ने उसको पढ़ा है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं और हम लोग बीइंग एजुकेशनिस्ट हम लोगों को इन चीजों का, इन डेवलपमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तभी हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें कर सकते हैं। मतलब अपने बच्चों के लिए जो इनोवेटिव टीचर्स हैं या जो लोग विश्वास रखते हैं कि हम हमारे एफर्ट से जो हमारे स्टूडेंट है उनकी लाइफ में चेंज आ सकता है, या कहीं ना कहीं ये जो ड्यूअल प्रोसेस है सीखने की, लर्निंग की, जिसमें हम बच्चों से सीखते हैं और टीचर्स बच्चों से सीखते हैं, बच्चे टीचर से सीखते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए रोल मॉडल बनते हैं। तो उसके अंदर हम मतलब इस तरह की रिपोर्ट को उनके लिए बड़ा बड़ा जरूरी हो जाता है जानना पढ़ना। तो इसमें एक मेंशन किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो, मैंने तो अपने 2010 के पेपर में भी मेंशन किया था। इन्होंने सजेस्ट किया है कि वन वेज ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग ऑफ दीज एडिशनल डिसिप्लिन एंड स्टिमुलेटिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट इज टू अलाउ स्टूडेंट्स for whom a subject is additional to study along with these whom the same subject is primary। मतलब जो हम प्राइमरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने का बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, या एक ऑप्शन देना चाहिए। ये आज हम हायर एजुकेशन मतलब हम एनईपी के अंदर 2020 के अंदर ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये बातें 2007 में भी हो चुकी थी। इन्होंने फिर एग्जांपल दिया है, फॉर इंस्टांस a mathematics student should study and undergo evaluation in philosophy as an subject along with students of philosophy constitute the primary subject. In sum, there is need to expose students, especially at the undergraduate level, to various disciplines like humanities, social science, and aesthetics, etc. in an integrated manner। मतलब ये देखो कि 2007 में ही प्रोफेसर यशपाल ने वो तो एक साइंस के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया है कि जो हमारी ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज, एस्थेटिक्स जैसी चीजें हैं वो चीजें साइंस के बच्चों को भी पढ़नी चाहिए। हम सभी को पता है कि जो फिलोसफी है वो अब्स्ट्रक्शन करती है। अब्स्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिलोसफी का। अब्स्ट्रक्शन अब्स्ट्रक्शन मैथ भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है मतलब जीवन मूल्यों से जुड़ने के लिए, उसके लिए आदमी को साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज भी पढ़नी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये 2007 में इन्होंने हमारे सामने रखी थी। तो जब मैं इन रिपोर्ट्स को पढ़ रहा था
रहा था या इन चीजों के बारे में जाना, तो मुझे बड़ा एक सुखद भाव रहा कि आज हम कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं कि हम 50-70 साल से हम लोगों ने मैकाले की पद्धति को पढ़ा है, या लेकिन जो लोग इस तरह की क्रिटिसिज्म करते हैं उनको एक चीज मतलब उन्होंने अपने इंडिया के थिंकर्स के कंट्रीब्यूशन को नहीं देखा कि बेशक हमारा एजुकेशन सिस्टम उस टाइम उस लाइन पे चला होगा, लेकिन हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारे फिलोसफर हैं, उन्होंने बहुत सारा एफर्ट किया है एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का। अपने इंडियन सब कंटिनेंट की अगर हम बात करते हैं, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है उसको एस्टेब्लिश करने का, तो हम कहीं ना कहीं बाइस्ड होके ये इस तरह की स्टेटमेंट देखते हैं। अगर हम इन पॉलिसीज या इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमारे सामने बड़ा एक सुखद एक वो आता है एग्जाम, हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी आते हैं और हमारे सामने एक लाइन बनती है कि हम कैसे हम बच्चों के अंदर वैल्यू एजुकेशन की को सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम इन डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान से पढ़ें। और आप ये देखो कि हमारे तो फिलोसफी एक बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, श्री अरविंदो स्वामी विवेकानंद है, जी कृष्णा मूर्ति हैं, रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने हमारे सामने एग्जाम्पल रखे हैं एक अच्छे वैल्यू सिस्टम के साथ एजुकेशन को कैसे चलाया जाए। तो एक मैंने बुक पढ़ी थी अच्छा अच्छा शिक्षक अच्छा विद्यार्थी, जो कि श्री अरविंदो सोसाइटी, उसमें आप उपनिषदों के एग्जाम्पल लेके उन्होंने पेपर लिखे हैं, कलेक्शन है, एक बड़े अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि एक टीचर एक स्टूडेंट्स को कैसे एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, कैसे वो एक दूसरे की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे सामने अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020। इसके अंदर आप सभी को पता है कि पहले तो एज का कैटेगराइजेशन किया गया, क्लासेस का कैटेगराइजेशन किया है, और अ, साथ में उन्होंने जो इंडियन इथोस के अंदर जो हमारा वैल्यू सिस्टम है उसके अंदर इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स हैं उन्होंने एम्फेसाइज किया है जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, जैसे वसुदेव कुटुंबकम है या जो हमारे एथिकल वैल्यूज हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों को बच्चों को पढ़ाई जा सकती है, उन सब को हर फील्ड में हर मतलब चाहे उसका मेडिसिन का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार से रिलेटेड हो, मतलब आदमी को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, जो कि इंडियन कंटिनेंट का है, वो उसके ऊपर बड़ा एम्फेसाइज किया गया है। आपको पता ही है कि इसके अंदर नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की कल्पना की गई है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे यंग माइंड्स है, वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के थ्रू डेवलपमेंट करें, और काफी कुछ है इसके अंदर। बेसिकली इन्होंने तीन चीजों पे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है इंडियन थॉट एंड फिलोसफी के ऊपर, जिसमें परस्यूट ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान प्राप्ति है, विजडम प्रज्ञा है, और ट्रुथ सत्य है। इन तीनों को प्राप्त करने के लिए जो एफर्ट किया जा सकता है वो करने के लिए इस पॉलिसी में पूरा जोर दिया गया है। और आप सभी को पता है कि हम लोग इंडियन अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो एंशिएंट टाइम में बड़ा अच्छा सिस्टम रहा होगा हमारा, लेकिन आज भी हम लोगों को उतना ही एफर्ट करने की जरूरत है कि जहाँ पे जो गैप रह जाता है उनको कम करते हुए प्रेजेंट में जो वैल्यू सिस्टम है आज की जरूरत के अनुसार, देखो वैल्यू सिस्टम पुराना भी अच्छा रहा होगा, लेकिन आज के टाइम में जो हमारी जरूरत है, जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि हम लोगों को इस तरह की वैल्यूज की बात करनी है, या इस तरह की वैल्यूज हमारे सामने आनी चाहिए, या इस तरह की वैल्यूज हम सामने लेके आए जिससे समाज का और देश का विकास हो, तो उसके लिए हमें उन वैल्यूज को सामने रखना होगा जो कि हमारे लिए आज के टाइम में आइडल हो सकती है, और उन वैल्यू सिस्टम को जिसको सभी अपना सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी आर्थिक वर्ग का हो, तो उन सब के ऊपर हम लोगों को ये वैल्यू सिस्टम लागू कर सके। और आपको पता है इसके अंदर एनईपी 2020 के अंदर इन्होंने बड़ा एम्फेसाइज किया है पुराने हमारे जो एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जो भी हुई थी, जिन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग और रिसर्च पर जोर दिया था। और हमारे सामने तो एक बड़ी लिस्ट है ऐसे स्कॉलर्स की जिन्होंने हमारे जो ज्ञान है इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके अंदर बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एनईपी 2020 है वो हम लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए कहता है, आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है, और बच्चों की जो एबिलिटीज हैं उनको डेवलप करने के ऊपर जोर देता है। तो कहीं ना कहीं जो एनईपी 2020 है वो प्रायोरिटाइज कर रहा है कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग को, और एथिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को। तो अब हम अगर देखें तो हमारे सामने अगर हम वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया हमारे सामने जो एजुकेशन सिस्टम आता है जिसके अंदर वैल्यूज की बात करते हैं तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू हो सकती हैं। तो अगर हम उसको ही बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा सकें या हमारे जो वैल्यू एजुकेशन के अंदर हम उनको इंक्लूड कर सकें, बच्चों को वो मोरल वैल्यूज दे सकें, तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। तो इसी के साथ मैं लास्ट में थोड़ा सा ये बात करूंगा कि हम लोगों के आगे हमारे सामने बड़े अच्छे अच्छे थिंकर हैं, बड़े अच्छे अच्छे इंडियन फिलोसफर्स हैं जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बड़ी बात की है, और हमारे सामने एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंटेड हेरिटेज है, यानी लिखित में हमारे सामने दस्तावेज हैं कि हम लोगों का जो वैल्यू वैल्यू एजुकेशन है उसको हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, और क्या क्या हमारे लिए भविष्य में संदर्भ हो सकते हैं जिसके लिए हमें आज के टाइम में वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है। इन सब के ऊपर काम हुआ है। बस हमारी आज की जरूरत है कि हम उसको दोबारा से री एस्टेब्लिश करें, री इंटरप्रेट करें और अच्छे ढंग से उसको एस्टेब्लिश करें। थैंक यू। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं तो बात कर सकते हैं। बेसिकली ये तो एक ओवरव्यू था, कोई रिसर्च पेपर नहीं है, फिर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर। Thank you, Dr. Desh Raj Sirswal. So very nicely you have tried to deal with this issue. You say it's a very light paper, but thing is you have gone through a number of documents and you have tried to see the present status of the deteriorating value system at present in India and the efforts that have been made overall throughout the series. And you have even tried to see how NEP is trying to bring back restore the deteriorating value system again back to normalcy. So there are efforts from various sides, and it's really a very interesting research paper. I say it's a research paper because you have tried to look into various documents to see the present status and what can be done. That is more important. That still a lot has to be done. Now I see on the screen Professor Dr. Rajiv Ghosh, sir. Let us move to him for his observations, comments, and questions. Dr. Ghosh, namaskar, sir. Please. Thank you, Dr. Rao. Dr. Sirswal has presented his version on the initiative of value education at the level of school and colleges specifically. And the education is the second institution of man. The first institution is family. So in my opinion, at this age, I feel, and I have seen children of different families. So I think that family is the first institution of man which teaches the rationality, harmony, conscience, all these things, the doing of right and wrong, all these things. So there should be a program, and you can initiate. You are in a very good place, so you can initiate this, that before teaching the students, teach the parents, because at least I think at least one class can be taken on this issue. Because you see, mostly the children of the present generation, they are pampered, and they are, because they are getting enough beyond the necessities of life, which was not the case during our times and even your times. So you should start that initiative. So in that way, the initiative of value education can be fruitful. That is what I believe. Now, because you see that what actually values are. Some values are innate and others are acquired. So we, who will try to bring forth
those innate values in us. It is only the parents, the father, mother, and the surroundings. So for that reason, it is and the external values, that means acquired values, those things will be coming from the school, colleges, and others. Because if the child from his very upbringing gets this idea very clearly, then he will start judging that what my parents have said, what I have learned from my family, and what I am seeing in the schools and colleges. So this is one important direction you can take, and you will be definitely it will be a fruitful endeavor, I should say. And another thing, you see, it is, you see, value education should not be a type of sermonizing certain do's and do nots. It is not that. It is to be presented in a manner which should be we should have a very rational justification. Because we cannot just say a child of 15 20 10 to 15 years, he is not having any idea of judging things, whether it is good or bad. So we should be very careful about that. And another thing which you have given, these things, not only the social perspective, the spiritual, moral and spiritual perspective should be given. You must be knowing, few days back I was seeing that they are trying to bring Ramayana and Mahabharata in NCRT syllabus to teach the students during the school level. So these things are required, because we should be traditional. Because in India specifically, you see, our values are being taken by the entire world, and Understood. we are totally unaware about that. Because from our very upbringing, we are not in touch with that. We just try, and the parents just force their children to enter into the rat race of this materialistic perspective, where education becomes a commodity, as you have said. So these are some of the observations I make. You try to give a good thought over it. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मेरे सामने एक ना स्कूल आया है चंडीगढ़ में, जो पेरेंट्स के लिए भी साथ साइड बाय साइड क्लासेस लगा के रखता है बच्चों को। मतलब श्री अरविंदो के नाम से वो स्कूल है। वो उनकी सप्ताह में पेरेंट्स के लिए अलग से क्लासेस लगाता है उनकी ग्रो अप के लिए, कि बच्चों को कैसे उन्होंने जैसा वैल्यू सिस्टम वो स्कूल में दे रहे हैं, उसको कैसे फैमिली के साथ भी वो रख पाए। जी सर, थैंक इनिशिएटिव बहुत अच्छा बात है, यही तो इनिशिएटिव है। पहले हम जी शुरू जी करेंगे फैमिली से, फिर जाके सेकंड इंस्टीट्यूशन एजुकेशन पर पहुंचेंगे। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, Dr. Sir. Very truthfully you have said that the family is the first institution, rightly so, and we do believe that mother is the first teacher. So, with that line, okay, whatever the child learns, he learns from the family first. Okay, so I fully agree with Dr. Ghosh that schools, colleges, secondary, because whatever may be the system, whatever may be taught at the level of schools and colleges, it has to be rectified, it has to be modified, it has to be institutionalized at the level of home, because home is more primary. Because whatever you learn from outside, that has to be put to check and balance in the family itself. The family has to judge whether whatever the child is getting from school or college, the habits, okay, the taste that the child is getting from outside in interaction with the outside world, whether that is in parity with the value system that we maintain at home or not. So that is how home is. I say it's a. Well, I agree with Professor Ghosh 100%, because family is the check. Family is the, जी what I say, it is the balance where it can freeze whether the growth of the child, whether the development of the child is in parity with the value system that we practice at home. Number one. Number two, the sort of value system that we develop at home, that puts a mark on the child. So at the early stage,
whatever happens in the family, that part is taken very easily by the child. So the parents too need to be, as you said, there is a school that is going on besides the college where the parents are educated. So that is one good area because the parents have to be even more cultured, especially before the children, because that is where the children learn actually. If the atmosphere in the family itself is disturbing, or it is not an ethical pattern, there is no pattern, ethical pattern, so definitely the child will go the other way around. The another most important point that Professor Ghosh has pointed out is that the needs and what the supply. You see, at the time when we used to be small children, we grew under utter poverty. I'm not saying even the well-to-do families, the children are not given so much of facilities those days. Okay, we grew under a lot of okay, even for having a small chocolate, we used to think of how we'll be having a chocolate. But these days, you give a chocolate to a child, okay, hardly there is any thanksgiving from the side of them because they're already supplied. We give lot of okay, in the name of love, we give lot of material comfort to the children that they really forget the value system. That actually when you when you suffer for something, there is a value to it. But when something is okay freely given, you don't attach any value to it. Okay, so you waited for some days to get a beautiful chocolate, a good chocolate. So you didn't really understand the value of the chocolate. Okay, but when you are forced, you are given a lot of chocolates, you will not understand. So that is where another good point that Professor Ghosh has pointed out. And two important points, and very nicely well, we should take it. Now we have with us um, K.C. Patnaik, sir. He is linked with Chinmaya Mission. He is a man, right man, I think so, to judge on it because he's a senior member in our family where he has gone through a number of stages and he's in Chinmaya Mission. A lot of things we can learn from him. So let us to K.C. Patnaik, sir, for his views. Hariom, can you hear me? Yes, Am I? sir, please. Audible, Uh, sir. Continue. I'm very glad to listen to the details given by Dr. Desh Raj. The initiative taken by so far, unfortunately, most of the schools and colleges you will find things are not like that. Things are different. Pramod, sir, It is please understood that one. because the thing is that initially, as Mr. Randit also told, the teachers and parents need to be oriented to know the value of education. The education means now they feel that somehow or other fill up your mind with the content of the book, appear in the examination and get a job. But that is not education actually. Education is something else. To be a good human being, to understand the society, to be considered to the necessities of the community. Where are they? Because they don't. That is to inspire. Briefly, I would like to say that we have 100 schools throughout India, including one international residential school at Coimbatore. And a lot of research has been done by the education cell, and we have developed a team which is known as Chinmay Vision Program, and they go to the schools and teach the teachers and parents about the value education and to inspire them. The teachers should feel inspired how to cultivate the value system or the value in the children, the character, because that will remain till the end, and they are making a human force for the society, for the country. It is not just giving a certificate and sending to the field for a job. That is not enough. That is not education. You can get a degree, that's okay, but that is not education. So Chinma Vision program, they are teaching the integrity, the integrity of the personality. Your thinking, doing and speaking should be the same. Otherwise, you are a disintegrated person. You think something, tell something, and do something. That is hypocrisy. That should not be the character of a man. He should be an integrated personality. For that, as we told, spiritual awakening or some sort of inspiration has to be made. He should feel that why he should have an integrated personality. You cannot impose on them. So the Cinema Vision program, our team goes
wherever, including the not only Chinmay Vidyalayas, any other school, if they request, the team goes and they make them 1 day or 2 days. They explain and they train the teachers and and tell the parents also, or if necessary, why value education is necessary, how much it is essential, and that helps a lot. And but unfortunately, we don't get the scope to go everywhere. Only we are confined to the schools. So we conduct every year one seminar for the teachers to teach them and to inspire them and to keep them in the mood that what is important is why it is important for value education and how they can impart them, how can they put them in the children. So Swami Chinmanda used to tell, don't invest on the child, invest in the child. And they are not vessels to fill up water or anything. They are the lights to ignite them, to lamp them, to brighten them. So there are various methods and schemes we have developed in my mission. If anybody is interested, any schools or education, because I am not a political man, so I cannot influence the government. So the government, if it is interested also, our team can go and orient the teachers about the value education, how it can be imparted, how it can be inculcated in the children, how they can be made better citizens. You know, children have a teachers have a great responsibility. They can create criminals, they can create great leaders and scholars and good human beings. So it is a great responsibility. Teacher's job is a very important job, which many do not realize. It's a very important role they are playing in the society because the whole future depends on how they contribute. They are the product, they are the producers. They create the products for the future country, for the future of the country. So they have a great responsibility. And how the product should be made, they have to decide how they can mold it. If the product is bad, the country will go bad, everything will go wrong. And it is a dangerous element, dangerous situation. We have to prevent that. So what Dr. Desh Raj has told, I am happy that government have taken so many measures, but how much it is implemented, how much it has affected. I can tell you the schools, every school, any school, they are colleges. How much it is now going, how much value education is being imparted, how much it is given to the children, how much value they have imparted when they leave the school and the college. No, it is unfortunate. But teachers and students, teachers and the parents will get responsibility. As I told, parents have to also support. That's why in Chinmay Vidyalaya, there is always a parents teachers discussion and seminars, and the parents are called and parents are made responsible to cooperate what they are teaching the students. Simply, if you teach in the class also, it will not help because most of the time at the home. So the impact has to be coherence. I mean, it is to coordinate between each other. So I don't want to go into detail about it because we have got a lot of things about value education as we discussed, but lots of things to do also. And fortunately, Janma Mission has done a lot. We have a research center in Coimbatore. They go on researching and they even bring out the scholars from outside and conduct seminars to find out how to inculcate values in the education because that is the important thing for the future of the country. And students, just because they get a degree or a qualification, that is necessary, but that is not enough. It is incomplete. To complete the character, you need to put proper values so that you understand the value of life, value of purpose, value of the job, value of what you are doing. So everything depends how you consider the value. If that is not considered, you cannot. You know, when a sculptor is doing a stone is there. When an artist comes it and he makes it a beautiful statue or a murti, the value is added and it becomes most valuable. Again, a stone can become a good statue or a good murti and can be even put in the temple for worship. So it is essential that
Value education is important and essential in every education field, whether it's school and college, and the government and the society should be responsible about it and find out ways and means, and they should encourage. So far I'm concerned, so far Chinmay Mission is concerned, we have a Chinmay Vision program. We go to different schools to teach the teachers how to impart values in the children, how to inculcate values in the children. If anybody is interested, details can be available. And even in the schools, whichever school, whether it is government school or private school, we can help them in implementing them. And I will not take much time. Thank you. And it was very enlightening talk. And I was very happy to listen that so many measures have been taken, initiatives taken. But the results have not yet come properly. I am sorry to say. And let us hope for the best. Hari Om. Thank you, thank you, thank you, Patnaik, for your observations and the efforts of Chinmay Mission for generating, for building a value-based society. And as you say that the schools and colleges, well, they make the students literate, but they are not making them educated in a real sense, because there is no holistic development of the students at the level of schools or colleges, because they are mostly the aim today at the schools and colleges is to get a degree, to earn a degree for jobs and all that. But at the same time, well, that is needed, but at the same time, but the level of schools, a moral development of the students is not coming up. The way Dr. Sirswal was pointing out that, say 20, 30 years, the sort of relationship that students and teachers used to have, that is missing these days. So somehow we are losing out, okay, because the sort of value system that is coming out from the society, the sort of value system that is generated at the level of schools and colleges, somehow we are missing, and that gap has to be bridged out through some system. And as you say, that Cinema Mission is working on that area. So, well, it is a great effort, and at least I should say, well, even the mission should approach the schools. When I say I'm not, if I'm not wrong, that we are going to help the schools out to make the school. Well, your pattern of education, we are well on with that, but we have a program where we can bring into go to the schools and have some programs, so that that way also maybe an effort can build in a sort of character in the student, and that will really helpful to the society, because we are having a program, but the schools, they are busy with their own schedules. But so I'm not saying, I'm not distracting anybody, but I'm saying if the mission, if it has the vision of that sort, we can even approach for the schools and colleges, so that their vision can be materialized in a greater way. So this is my objection. Thank you, Patnaik sir, for your views, and I also thank Sirswal sir for his talk. Now we have with us many teachers whom to go. Anybody who is interested, well, Brindavan sir, you want to say something? Yes, we have even Dr. Pramod from Hyderabad. You can even invite him for this view. Brindavan sir, you want to say something? Brindavan Mahapatra sir. Anyway, we have with us the D. Pramod sir from Hyderabad. Well, sir, do you have anything to speak on this issue? I'll wait for half a minute. Am I audible, sir? Narayan Uh, sir? you're, you are audible, sir. Namaskar, please, sir. Namaskar. The paper presented by Dr. Siswal is very much contextual because he has discussed many things regarding the uh, different education policies we have accepted in future, and presently we are going to implement the NEP 2020, which is in a controversial position. Whether we'll accept it or not, this is a matter. Okay. Number two, uh, our Dr. Ghosh beautifully explained the innate value and acquired value. Really, family is the uh, first school from which the values starts. I accept it. Really, it is acceptable. Number two,
NEP 2020, when we are going to implement in the country, some of the states in India, they are not accepting NEP 2020. Uh, why I I do not know why they are not accepting it. As educationist, and we are the uh, as we are related to philosophy and value system. What should be our opinion regarding the implementation of NEP 2020? Whether it is based on value system or not, the the entire course curriculum and the uh, uh, things we are going to be implemented in NEP 2020 is really benefited to the students in urban area, also in rural area, or not? This is a question. This is a vital question now, present day. And uh, though we are not political people, we are the teachers and we are the educationists, we should think about it. Uh, Dr. Siswal, okay, uh, has explained different the education commission, that Radhakrishnan Commission, Madhulya Commission, Kothari Commission, and Acharya Narendra Dev Committee, and presently we are going to face the National Education Policy 2020. So my uh, observation goes like this, that people are not very much acquainted, and teachers are also not very much acquainted, and general public also not very much acquainted the new education policy, that 2020. So what Dr. Siswal has uh, delivered today, really it is very much fruitful, and we should uh, we should accept it. At least we should accept it. Many good things are there, and which will be benefited for the students, and also and it has some social impact. So I request Dr. Siswal, give your specific views whether you are going to accept this the new education policy 2020 or not. This is my specific question. Because you have studied many things and you have discussed many things in different education policies that we have come across in the last previously we have come across many educational policies. Now in first, and they are not accepting, and they are not going to accept this education policy or or new education policy, what may be called. Why? Dr. Sirswal, please, how do you Uh, see This 2020, is please? my this is my simple observation. And however, it is a good paper, and very much contextual, and we should discuss such papers in future. Thank थैंक you. यू सर। सर मेरे व्यू में ना अभी हम एनईपी के लिए तैयार नहीं है, ना ही इंटेलेक्चुअली, मतलब हम लोग ना तो अभी हम लोगों को कंसेप्टी क्लैरिटी है। दूसरे इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोग बहुत पुअर है। जैसा मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट की बात की जाती है, वो चीजें हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब वो फैसिलिटीज हमारे लिए अभी इतना ज्यादा मतलब कहने का भाव ये है कि हम एनईपी को एक तरह से ये लगा लो कि हम पुरानी चीजों के ही नया चेहरा लगा के एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इसमें अभी तक की जो प्रैक्टिस है। Again, sir. What? मैंने ये बोला कि
जो पुरानी चीजें हैं, ट्रेडिशनली जो चीज चल रही है, बस वो उसको हम नया नाम देके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। Nothing new is there. Nothing new is there. हाँ, नथिंग न्यू, क्योंकि जो आइडिया लेके चले हैं ना, उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। Okay. और क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप एक ब्रॉड विजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। Okay. आपको बताया न्यू नहीं दोस्त, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, न्यू कोर्सेज, तो ये सारी चीजें इसमें है कमी देखने को। नहीं, दो चीज इधर आ रहा, मतलब दे सरफेस अप। नंबर वन, you say it's the old wine in the new bottle. Number one that you are saying. Number two, you are saying it is a very broad vision. Okay, so it is very comprehensive vision. Okay, then you are saying we don't have infrastructure. Somehow there is a contradiction because पुरानी चीज को नया बॉटल में अगर पेश कर रहे हैं, ठीक है, वो तो है, तो उसमें एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? नंबर वन, इट इज नथिंग पॉलिटिकल इन दिस, सीधा साधा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, ठीक है। हमारा जो आज का जो विषय है वैल्यू एजुकेशन की, इसमें वैल्यू एजुकेशन के ऊपर फोकस है क्या? नंबर वन। नंबर दो, अगर वैल्यू एजुकेशन पे फोकस है, अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को आगे लाना चाहते हैं, जो केमिस्ट्री का विद्यार्थी है या मैथमेटिक्स का विद्यार्थी है, अगर उसको जो वैल्यू ट्रेनिंग, अगर जो कमी हम जिसकी हमारा चर्चा हुई है, हो रही है, ये बच्चों में जो वैल्यू सिस्टम है वो डिटोरेट कर रहा है। ओके, तो अभी जो मॉडल आया है, ठीक है, हम जो विषय पढ़ रहे हैं वो ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो नॉलेज सिस्टम है, जो एंशिएंट सिस्टम है, उसी के बारे में हम अगर चर्चा करें, वो वाला जो रामायण महाभारत व एंशिएंट टेक्स्ट है, वो अगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी क्या आ सकती है, वो मेरा समझ से बाहर है। नंबर वन, उसमें क्या दिक्कत नहीं है। ओके, हम देखिए, जो चीज अगर नया हाँ आता सर, मैं है, इसके नहीं नहीं, जो विद चीज पॉइंट नया आता है, क्लैरिफाई। नहीं नहीं, जो चीज नया आता है उसमें ऑपरेशनल डिफिकल्टीज तो होती है इनिशियली, धीरे 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 टाइम वो खत्म होती है, लेकिन आगे अगर अगर एक विजन लेके कोई चल रहा है, तो उसको हम क्या कमी हो सकती है वैसे हम देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल सेंस में वो भी हमें पीछे हैं, लेकिन देखिए, जो नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो नॉलेज सिस्टम गुरुकुल में होती थी, बस वो वाला हमारा और कुछ ज्यादा लेनी नहीं है, हम ये वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जी दिक्कत जी आती है? जी, हाँ हाँ, देखो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट भाई, सुनो, इसमें क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का अबंडेंस है अभी, चारों तरफ स्मार्ट क्लासरूम है, चारों तरफ एफ्लुएंस है इन एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स, but where are the teachers, where is the so we have to bring one thing that means all these things we have to just try to inculcate the spiritual education, spiritual element of education, or values, spiritual values, which has been neglected all over these 70 years. That is the most thing, and for that no infrastructure is necessary. You just put them in the course and just teach them. Thank you. अच्छा सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। yes, yes. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसलिए मैंने की कि अगर आपके स्टेट में एनईपी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तो आप कोर्स स्ट्रक्चर्स को देखना, उनके वहां पे एक ऑप्शन दिया जाता है एनईपी के अंडर ग्रेजुएशन में, कि आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम की वजह से हमारे आसपास की यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम पता है क्या हुई, कि उन्होंने जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी को कंपलसरी पार्ट में डाल दिया है, उसको ऑप्शन नहीं रखा। मान लीजिए हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, उन लैंग्वेजेस को के बराबर नहीं रखा उसको, तो एक चीज को प्रमोट कर दिया है लेकिन दूसरी तरफ उनको नहीं रखा।
उसी तरह से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिवर्सल वैल्यू सिस्टम के ऊपर एक पेपर बनाया है, मतलब एक बेसिक पेपर है जो वैल्यूज के ऊपर है। वहां पे उनको बोल दिया गया है कि नो रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू टीचर्स। मतलब आपको पता है कि हरियाणा के मतलब 120 कॉलेजेस में से ओनली 5 to 6 में फिलोसफी है। तो वो जो ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स है उसमें क्या किया गया है कि उस सब्जेक्ट को दे दिया गया है जहां पे वर्कलोड कम है, मतलब जिसको एक बैकग्राउंड नहीं है उनको पढ़ाने के दे दिया गया है। तो आप ये देखो, एक फिलोसफी का टीचर जो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में वो चीज होगी, उसके करेक्टर में वो चीज होगी। लेकिन एक आदमी को सिर्फ वर्कलोड की वजह से आप वो पढ़ाने को दे रहे हो तो वो गैप रह जाएगा। मैंने यही बोला कि ये ब्रॉड है, आइडिया तो ब्रॉड है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो पुरानी चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एनईपी नाम दे दिया उसको। ये चीज है सर। मैंने 2 यूनिवर्सिटी के यूजी बोर्ड में हूं, तो वहां पे ये चीज चल रही है। मतलब वो नया जो आइडिया हमारे सामने आया इंडियन वैल्यू सिस्टम को रीजनरेट करने का, या पेपर ऐसे ऐसे ऑप्शनल दिए जा रहे हैं कि जिसका मतलब उनसे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जस्ट हर सब्जेक्ट के जो ऑलरेडी अवेलेबल पेपर है वो डाल दिए जा रहे हैं, कोई नया क्रिएशन नहीं हो रही। ये प्रॉब्लम है बेसिकली। आइडिया तो अच्छा है, आइडिया देखो, हम तो फिलोसफी के हैं और हम इस चीज को, जब एनईपी 2020 का ऑब्जेक्टिव आया था हम लोग सबसे ज्यादा खुश हुए थे। हम लोग इसलिए खुश हुए थे कि इससे हमारे जो बच्चे हैं या जो हमारी यंग माइंड्स है उनको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, या उनको भी एक करियर ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है सर। जी जी, थैंक यू। Okay, Dr. Silva, thank you. Well, we have with us the promoter. Let us go to him for his views on. Sir, hello. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Please, sir. Are you able to hear? The talk is very nice to explain it. NEP 2020, lot of applications, lot of good information are there. We should not think about this. Are you able to hear, sir? Sir, voice is very alarm. Voice is coming, but it is disturbing, sir. Unnecessary sounds are coming. Hello? Okay, carry on, sir. Carry on, sir. Carry on. Well, Shravani madam, please. We'll move to promotion. सर नमस्कार। Is it okay, sir? सर नमस्कार। Namaskar. Shravani madam. Sir, thank you very much, Dr. Desh Raj sir, for beautifully elaborating on different initiatives taken by the government for value education. No doubt, value education is one of the important part in educational system that must be inculcated. If we have to see the new education policy that is implemented NEP 2020, that it is a robust form of policy comprising all previous policies, and there are a lot of values given in this policy for children, teachers, all those to implement value education. But the one of the important thing, that is reflection part is the duty of the government, how to reflect all those values in educational system, so that teachers as well as children, they can just apply it in their life. That is absent, and so far as my experience is concerned, since 15 years, those teachers training programs that has been undertaken by the government in different elementary and secondary education, all those training inputs, these are just touching or focusing the values, but the way how to inculcate it, the approach, the strategies, those are probably not sufficiently addressed.
and that is the important part that is missing in our system. Everybody is telling about values, all policies, committees, recommendations, they are focusing on values, value educations, but in which way it has to be implemented, in which way we have to measure the values of children, that the children now in the primary stage, when he is going to upper stage, to what extent he is using values in his or her life. That measurement part is not at all considered, and these are not at all given importance by the teachers or the policy makers, those who are handling this education system. And that missing part that I have been experiencing before some years, and that should be inculcated and that should be given importance, and in specific teachers training programs that must be carried out by the government on value education, all those things, and that should be reflected. That reflection part is absent. Thank you very much. Thank you, madam. Nice thing you have pointed out that various committees are coming. Okay, various policies are changed. There is a focus on values. We teach values. Okay, there's a paper on that, but still practically nothing is coming out. Okay, that's what even Dr. Sirswal was also pointing out, that there are, okay, the curriculum it is there, but we are not really building up a society based on what actually is there in the curriculum actually. So the focus that Ramani Madam is saying is, well, we have a teaching, okay, we have a value system that we want to learn in a school or a college, and having, okay, got that knowledge, we should see whether the child is living as per the knowledge that he has acquired. Okay, telling truth is a value. Okay, so is that the value that the child is actually putting up in his life or not? Okay, to be sincere, to be obedient is a value system that is being taught to various moral subjects. Well, whether the child is living to the value that he is learning in the schools or colleges, so that part is missing. Okay, that evaluation part is missing. Whether we are living as per our knowledge or not, that is a big question mark that we are all having. But having said this, one thing let me assert, that values really cannot be taught. Values, real sense, they cannot be taught. Okay, we have to learn ourselves. Okay, okay, we have to learn, we have to modify, we have to clean. Nobody can cleanse you inside. Values are something which are inside. Okay, we can only say this is a value, but the cleansing part, this got through. Okay, the values can be really inculcated. What Ramani madam was saying, they can be inculcated when we brush up inside through our own personal effort. And how to make a student learn this personal effort to clean himself from inside. So that part I go with Dr. Ghosh, and that part should be initiated. That part should be carried out throughout the life of the child at the level of home. That inner cleansing. Okay, so if that is not happening, there is no self effort on my part. I know speaking the truth is good. I know it, but am I practicing it? That is a big question mark. Who is going to monitor myself? And how that is possible if I have my inner brushing? So that is a conscious effort that the child or a student or any human being, he has to inculcate that. The self brushing is so important, and that is missing. And that is missing somehow in our entire value structure, maybe at the level of family, at the level of school, at the level of society, or at the nation at large. So this is what is missing. Okay, so if we can bring it out somehow, I don't know how, but that could be a great achievement. Okay, so let us move to with this vote. Let us move to our admin, Professor Pramod Kumar Das, for his observation. Thank you, sir. Am I audible? Sir, audible and visible both. You are very much audible. Thank you, sir. Very nice presentation and very meaningful discussion.
Thank you, sir, for your innovative presentation. Though this topic is very old, because we have been discussing since many years about this topic after Corona, I think the simple thing has been made complex. I think value is not a problem for us. It is very simple thing because we are talking about human life. Human life is not possible without value. So, which is very simple thing. Now it has become very complex for human being, for society, for nation. We think that Vasundhaiva Kutumbakam as if a very big concept, as if it is a miracle. It appears to be so because we are far away from the values. So we can think of three phases of our generation. There was a time when education was value only. Without value, there was no stand of education. Just like Upanishads, Bhagavad Gita is full of values. In every chapter from the Visad Yoga, Arjuna Visad Yoga to Mukhya Sannyas Yoga, every chapter speaks of values, transformation of life. And that has been demonstrated through the character of Arjuna, who was very much confused. His mind was imbalanced, he was not stable, and being a great warrior and being very close to Lord Krishna, this was his qualification. He was not a normal man, he was not an average man, he was a great warrior, he was educated, and he was very close to Lord Krishna, Sakha. In spite of that, he was disturbed in the battlefield to do his duty. He was confused. So this is the situation. And in that very chapter, first chapter, it has been taught that how can we overcome Visada. And there is a transformation in human personality that disturbed Arjuna has become a real karmajogi, that he was mentally ready to fight. So there is a transformation of human personality throughout the chapters of Bhagavad Gita, and that has been demonstrated through the character of Arjuna. Similarly, school and colleges and universities, these are the such platforms, opportunities for the children where a child can have the better versions day by day. What I was yesterday, I should have my better version today and tomorrow. So that is the aim of education. So the point is, in the first phase, even from in the age of Socrates, and in Indian system, if we shall go to the Vedic and Upanishadic ages, there we cannot think of education without value. Education is equal to value, we can say like this. All other aspects of education that was treated as aparavidya, that was not so important for us. If we talk about paravidya, that is only value centric only. If you do not know how to live a beautiful life, a perfect life, then there is no meaning of education at all. This was the phase. What happened after that? That value systems become that was categorized, that was squeezed to a particular department. We call it humanities. That means if you are a science student, you are aligned to such nasty value systems because these are undermined. You are an art student, you are talking about philosophy, values, etc. Though you are a dull student because you are not qualified to be a science student. Therefore, you are studying arts, humanities, philosophy, Bhagavad Gita. These are all undermined in the second phase. And we are suffering in this third phase when we are crying, when we are repenting, when we are searching,
when we are reconstructing the value system, this becomes a very big task for us, which was very simple. The simple thing has become a complex, and we can discuss this in our family also. Suppose we neglect a child, as Ranjit sir said. Suppose we neglect a child, what happens in our family now? Suppose a child is born, then the parents shift from one place to another place, a better place, to give better education to the child. They need transfer, they in service, they want to change the place to give good education to the child in the good school, in good college, good university. So what they mean by that good means that my son or daughter will have good marks than the son or daughter of my neighbor or my friend circles. He or she will be the first in the school and college. Okay, this is the attitude of the parents. So they define goodness with smartness. That my son or daughter will secure good mark, will have a good job, and he or she will be recognized in the society. This is the competition, and they have imparted this competitive mood and interest in the mindset of the children. So they did not know any value. Rather, they are angry, they are aggressive, they are competitive by nature. So this type of a psychic has been developed not only in the psychic of students, but also in the psychic of the parents and also teachers. What happened? Very rightly, Despal sir said that yes, NEP has been introduced, but this is a pass. This is just like the other curriculum, other curriculum or syllabus, because this has taken very casually. We experience, Dr. Rao, we experience in these colleges of Odisha how much we are serious about value and ethics class. No students are coming. No students are coming to the value and ethics class. Teachers are not interested to take that class. So that has become very casual. Just to, and it 25 marks only. So by when they are who are evaluating the papers, they are giving the pass marks. Oh, it is 25. Let us give him 20 marks, 12 marks or 13 marks, and the candidate will pass. So this is a formality. In the third phase, we are also not serious about the real implementation of values. So in the first phase, there was only value. In the second phase, there was no value. And in the third phase, we are trying to establish value system again and again, but we fail because we are not serious about it. But we should be hopeful that in this way of this is a consciousness, this is an awareness, and in course of time our awareness will become fruitful when actually the collective psyche will be changed and everybody will rise to the occasion to restore value in our personality. So there is a difference between living life and loving life. We are just living our life with the degrees and other so-called prosperity of so-called prosperity, but that is not loving life. Education should be for life. So that is the beautiful difference between knowledge and wisdom, jnana and vijnana. So we are running after knowledge, we are not running after wisdom. So that is the point. So back to Vedas, back to Vedas. This is a very great slogan. We should take into our mind and heart that let us back to Vedas and Upanishads. Naturally, uh, this curriculum will help, but that should start with our family. That should start from ourselves. Every individual should be conscious about it. Everybody should love the teachers and scriptures. Everybody should love to live a life of values. Thank you. But I enjoyed this discussion and topic, and what Desh Raj sir said. He 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 is very pragmatic.
He is describing the real situation of the present scenario. He is hopeful. Being a philosopher, he is very happy that we are teaching that subject, and there is a hope for philosophy also in future by this by this introduction. But we are not so successful, and we hope to be successful. Are you? Am I? Are you agree with me, Dr. Dasraj sir? I agree with you. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you. This is my some observation. Okay. Okay. Thank you, Professor Das. When you are agreeing to what Desh Raj has said, why Desh Raj will not disagree with you? So, in a lighter mode, I am saying when there is agreement from one side, then how can there be disagreement from the other side? So, let us have lot of agreement. Let us agree to be human beings. Let us have a human quality. Let us think, let us understand, let us practice that we are all human beings, we are all connected. Okay, we are not having animal blood, we are having a human blood. Okay, so at least that realization should come. And beautiful thing, this evening, one beautiful point I could learn from Ramani Madam also. She said the value model is already there in the system. In the system, the value model is there. What is lacking is the practice. What is lacking is evaluation, whether that practice is going or not. What Professor Das said, this ethics and values that has been implemented, that is there. Okay, that paper has been introduced, but that paper is only facilitating the academic side. But real practice side that is missing, which even Dr. Sirswal was also concerned about. The practice is missing. We have a lot in theory, but that is not turning up in real practice. So that is the great problem that we are having. We have lots of very theoretical side we are well balanced. Okay, we know things, we have do's and don'ts well, we understand, the students understand, the teachers understand, but that is not brushing up, that is not coming up because we are not trying to refine ourselves internally. So that is the problem. Unless and until there is an internal cleansing, there cannot be a value system that can be really practiced. So this is my submission. So I really enjoyed this talk and I really enjoyed the discussion also that followed. So it was a great evening. Well, now I request our admin to, because in the absence of our coordinators, I request our admin to propose a formal vote of thanks. So thanking everybody. Okay, I request our admin to propose a formal vote of thanks. Thank you so much, Dr. Siswal, for your talk and also all who participated in the discussion that followed. So over to Professor Das for thanking, I am very proposing a vote. I am very much grateful to the speaker for receiving our accepting our invitation and delivering a very beautiful topic. And he shared his valuable thought with us in this evening. And he is very patient, he is very loving, and he is very sincere also. And he is the man behind the progress of philosophy in the country in both writing manner and oral manner. I am very much grateful to Sir Desraj sir. You are my friend, and always, whenever we have invited you, you have said no. Never you have said no. So your yes is a big yes for us. Is a big yes for the future of our philosophy family. Thank you, sir. And I am very much grateful to the senior professors like Ranjit sir. We are very much inspired by his presence. We solicit his presence and his beautiful presentation. Whenever he participates very sincerely. So that makes the evening very meaningful. All the evenings very meaningful. And today we have with us um, Kesi Patnaik sir. He belongs to Chinmay Mission, and he not only a devotee, he is a karma yogi. He is very much he believes in action. He believes in action, and we shall request him to deliver a talk because for a long time we have not heard him. So, sir, please, if it is possible, yeah, you prepare a talk and
you deliver a talk in this platform in the coming days. And I am very much thankful to Bundavan sir for being with us, for loving us, and for discussing every topic every Sunday. That is the beauty of his personality. And Dr. Rao, without if I don't really flatter, he's the man behind the academic beauty of the session. Because many times I feel that perhaps I have missed some of the parts of the speaker's speech or discussion, but he is the man who is very much attentive from the beginning to the end. So this is just like meditation. Meditation does not mean that you should just remain silent and you will think nothing. That is not meditation. Meditation means when we are very much attentive even to the noise, even that what happens, losing your personal engagements, other engagements. So he is very meditative in his duty as a moderator. So in this and I also thank Sapani madam. She is a regular participant in this forum, and she, whatever she speaks from her heart and mind. So with this, we shall meet again and again. Again, I shall request K.C. Patnaik sir to deliver a talk, and also I shall also request Dr. Ranjit sir. Last time you had delivered a very beautiful topic, and the discussion was very engaging. So please, sir, come. Now we shall discuss because we feel the very audience are very few. So we shall come with we shall discuss having beautiful topics, sir. Thank you, sir. You can contact with me in my WhatsApp number. You give me topic. I shall create slots for you. Ranjit sir and K.C. Patnaik sir. Thank you. With this, this session is declared closed. Thank you. Thank We you. also thank you for thanking all. Thank you, sir. Thank you. We also thank Inder Raj, who was present from the beginning of the talk. So we thank Dr. Professor Das for thanking all, and also Inder Raj for being present throughout the session. Thanks, Thank you. everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Yes.